Hello. One question for everybody here. सभी को mentors allocate हो गया है? If yes, give a +1. If no, give a -1. Mentors in the sense technical mentors, not the POCs. Okay. If you don't, okay, Ayush. ठीक है, Ayush, can you like name your POC? जो भी था अगर नाम पता है तो. छोड़ो, हम लोग लिस्ट से निकाल लेंगे. ठीक है. And also give a +1 if you have like had a meeting with your technical like mentor जो भी है. मीटिंग्स हुआ है तुम लोग का अभी तक आइडियाज को लेके, तुम्हारा आइडिया जो भी था. ओके, आकाश का साथ मीटिंग. सतीश. ओके, नाइस. बाकी सबका बोलो, मतलब आकाश सतीश आर एक्टिव फोक्स. सुदीपा, आकाश, बेज एंड आयुष. आयुष का साइन नहीं हुआ है. सुदीपा तुम्हारा हुआ है कुछ भी, मतलब मेंटर लोकेशन मीटिंग्स या कुछ? सुदीपा. ठीक है, ठीक है. तो हो गया. तो वही लाइक अभी थोड़ा वही सिंस अभी समझ जो मीटिंग में जितना लोग आया वो भी कम हो रहा है. प्लस लाइक वी आर एक्चुअली लाइक खत्म हो रहे हैं सेशंस धीरे धीरे. लाइक हाउ मेनी डेज? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 हफ्ता और मैक्स टू मैक्स सेशन होगा. उसके बाद लाइक विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर आइडिया स्पेसिफिकली. ठीक है. इट्स गुड ओनली कि वी डोंट हैव दैट मच पार्टिसिपेंट्स. हम लोग का जितना जन है, सपोज लाइक बाय द एंड लाइक फ्रॉम 10 फ्रॉम ML, 10 फ्रॉम वेब, देन आल्सो इट्स मतलब गुड फाइन विद अस. लाइक 10 जन को अच्छे से लाइक विल हेल्प, विल सपोर्ट एंड विल मेक श्योर कि तुम लोग सभी जो जो प्रोजेक्ट बना, मेक श्योर लाइक बी रेडी बिकॉज यू गाइस विल बी शोकेसिंग इन सेमिनार हॉल. ठीक है. नाउ द सेमिनार हॉल इज लाइक बुक्ड. सेमिनार हॉल लाइक सच्ची में ऑफलाइन इवेंट हो रहा है. दैट्स ऑन 27 मंडे है. तुम लोग को आना पड़ेगा ऑफ कोर्स. बाकी लाइक उसके साथ कुछ अगर लाइक देखते हैं क्या क्या हो रहा है. मतलब अभी भी प्लानिंग चल रहा है उसके बारे में. बट हाँ, वी हैव द वेन्यू. तो एक ऑफलाइन इवेंट होगा. अभी लाइक आई नो बहुत जन हो नहीं, लेकिन जो 3 जन अभी हो, लाइक आर यू गाइस ओके? राइट, मंडे को आना है, थोड़ा बहुत लोगों को प्रोजेक्ट दिखाना है. विल लाइक शोकेस एवरीथिंग यू मेड. मे विल कॉल इन सम टीचर्स, कोई बाहर से अगर होपफुली अच्छा लोग तुमको देखना चाहिए. वी कैन इवन गिव आउट प्राइजेस एंड स्टफ. तो लाइक यू गाइस आर अप फॉर इट, राइट? आकाश, सतीश, अप फॉर इट करना है. ठीक है, थम्स अप मिला है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. एंड ऑल्सो लाइक तुम लोगों ने लास्ट वाला जो था सेशन का ये था आइडियाज नोट था. उसमें यू गाइस मेड लाइक यूज जिमिनाई API. 27 को नहीं हुआ. ओके सुदीपा, नो इश्यूज. तुम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, बाकी तुम्हारा कुछ कर लेंगे हम लोग, है ना. 27 डेट तो फाइनल है. विल लाइक मेक श्योर कि तुम्हारा कुछ कर लिया जाए, ऑनलाइन हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, है ना. मे भी तुम्हारा एकदम मीटिंग में बुला के तुमको सेमिनार हॉल में एकदम लाइक गूगल मीट करवा के तुम्हारे स्पेशल करवा देंगे इफ नीडेड. ठीक है. तो मैं बोल रहा था, हाँ, कमिंग बैक, लाइक एवरीबडी हियर, हाउ कंफर्टेबल आर यू विद नोड? यू गाइस नो नोड? इफ यू गाइस नो नोड, गिव अ थम्स अप. तो थोड़ा बहुत सीख लिए. NPMI कर लिया है एक बार एटलीस्ट. नोड file.js किया है एक बार एटलीस्ट, या थोड़ा बहुत समझ आ रहा है. नहीं आ रहा है तो -1 लिख दो. समझ आ रहा है तो थम्स अप दे दो. लाइक वी नीड टू नो राइट कि कितना लाइक प्रोग्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है. वी नीड टू स्लो डाउन. और सेशंस चाहिए, नहीं चाहिए? सो थोड़ा सा इनपुट. एकदम थोड़ा थोड़ा ठीक है. नाइस. सतीश, ग्रेट. एकदम थोड़ा थोड़ा इन द सेंस. सतीश, अगर मैं तुमको अनम्यूट करने बोलूँ, क्या तुम करोगे? अगर नहीं करना है तो कुछ इशू नहीं, तो ज़बरदस्ती नहीं है. बट लाइक वी लाइक टू टॉक थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं. 2 मिनट लेंगे. अरे ओके, थोड़ी देर बाद. ओके, whenever you are ready. ठीक है. बाकी लाइक आकाश एंड लाइक द क्वेश्चन इज दैट, देखो, नोट जेएस या जो भी है, इट्स ऑनेस्टली बोले तो उतना टफ नहीं है, उतना इजी भी नहीं है. बस आज ही ज्वाइन किया. अच्छा, आयुष इज ज्वाइनिंग नाउ. बट आई थिंक आयुष, आर यू द फोक गाय फ्रॉम BCA? आयुष, आर यू फ्रॉम BCA? ओके, आई गेस यू ऑलरेडी नो नोड. यू नो नोड जेएस आता है थोड़ा बहुत. यू हैव लाइक had meetings and all with Manjeet, I guess. 'Cause, like, I guess you already know Node. You know Node.js. आता है थोड़ा बहुत. You have like had meetings and all with Manjeet, I guess.  'Cause, like, I guess you already know Node. You know Node.js. आता है थोड़ा बहुत. 'Cause, like, I guess you already know Node. You know Node.js.
ठीक है ठीक है। तो लाइक टुडे आल्सो विल बी लाइक थोड़ा सा नोट का रिवीजन होगा। नोट तो रिएक्ट आता है बढ़िया। ठीक है सैकत सैकत के लिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। लाइक आयुष सैकत जो भी हो लाइक आई थिंक स्नेहिंदू थोड़ा सा रिकैप दे देगा, ज़्यादा नहीं लाइक कुछ है नहीं लाइक हाउ टू स्टार्ट विद नोट। स्टार्टिंग विद नोट इज इजी। एक चीज और लाइक फाइनल क्वेश्चन फॉर लाइक एवरीबॉडी हियर, यू गाइस हैव नोड इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम राइट? सभी के लाइक सिस्टम में नोड है, कॉन्फ़िगर है, नहीं है तो बोल दो, इशू नहीं है, कोड स्पेसेस खोलना पड़ेगा बस। ठीक है इंस्टॉल्ड है। ओके ग्रेट, stand to go ahead. Like I think like most of the folks will like visit the recording, so like I think like have your sessions according to that. ठीक है कोई बात नहीं. Okay, so hello everyone again. Welcome to Project DevRush again. So basically आज का सेशन ऑन मतलब जो पहला सेशन हुआ था वो इट वाज लाइक अ स्टार्टिंग पॉइंट टू बैकएंड डेवलपमेंट विद नोड.जेएस. ओके, आज का सेशन थोड़ा थोड़ा बहुत उसके ऊपर ही है. So for the folks who don't know Node.js, basically Node.js is a JavaScript runtime जो ब्राउजर के एक्चुअली पहले पहले क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर्स में ही चलते थे. ठीक है, तो Node.js provided a JavaScript runtime so that you can run your JavaScript code on the server side. As of now, you can understand server side as your own computer. So you can write your JavaScript code on your own computer and you can execute that code on your own computer itself. So that is what Node enables us. Do not need to worry about Node much more than that. If you want to go deeper into what are the functions in the Node, what are the functions in which are inbuilt in Node, then you can go on to and like watch the read through the documentation of Node. Okay. तो आज का सेशन मोस्टली ऑन हाउ टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेसेस है. ठीक है, मोर स्पेसिफिकली MongoDB. तो एज ऑफ नाउ क्या और थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं Node.js का. मतलब पिछले क्लास के जो स्लाइड्स हैं आई कैन ओपन देम आल्सो एंड आई कैन डू अ क्विक recap of that. What do you say about? I think like 3 मिनट लेके recap ही दे दो. ठीक है. That will be better. Everybody will come to the same page. Okay, give me a minute. ये रहा. ओके, तो ये पिछले वाले क्लास का स्लाइड्स है. ठीक है, तो लेट्स लुक एट व्हाट इज Node.js, बन, yarn, व्हाटएवर इट इज. yarn तो मतलब एक पैकेज मैनेजर है जस्ट लाइक npm. ठीक है, बन इज आल्सो एन एनवायरनमेंट, रन टाइम एनवायरनमेंट लाइक Node.js. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि एक Node.js is like a JavaScript runtime environment that allows you to execute your code on JavaScript code on the server side. Basically, it allows you to run your JavaScript code on your own machines. And in future, when you go onto deploying Node.js applications, you will see that you can execute your JavaScript code on the server. Okay, what is a server? You can understand a server as a computer through which you can interact with your clients, whatever clients you build. ठीक है, and runtime क्या होता है? Runtime is the time till which a particular program runs. As the definition says, बहुत simple है. Runtime जितने देर तक तुम्हारा प्रोग्राम रन करेगा वो रनटाइम है. ठीक है, फिर हमने इनिशियलाइज किया इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैकेजेस के बारे में बात किया. I'll go on to internal and external packages today also, don't worry. ठीक है, Express.js client server architecture. ठीक है, client server architecture. Let me show you. Let me open my eraser. Give me a minute. Share this tab instead. Okay, so basically let's say this is your client, this is your server. What is client server architecture? Client will send some sort of request to your server. Server will process the request
and it will respond back to the client. This is called the client server architecture, ठीक है. और ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो बात हो रहा है ना यहाँ, तो that is called request response model, ठीक है. So that is even in this definition also, you can see client sends request something, server processes the request, server responds to the client. This is the client server architecture, nothing too fancy. And as I've told you, request response model कि client वो जो total जो model है ना, कि client server को request send कर रहा है, फिर server उसको process करके response send कर रहा है client को, that is the request response model basically, ठीक है. इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग के बारे में, ठीक है. डोंट वरी. तो लेट्स गो टू द स्लाइड्स ऑफ टुडे अगेन. Okay, so it was the recap of Node.js, ठीक है. तो डोंट वरी, डोंट लाइक क्रैम टू मच, ठीक है. कोई बात नहीं अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है. I'll get on to the basics again, ठीक है. पहले थोड़ा और तुम्हारे पास तो रिकॉर्डिंग होगा ही, तो तुम उसको गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि आई हैव डिस्कस्ड देम इन डिटेल्स ओवर देयर. व्हाट इज HTTP एंड स्टफ, आई हैव टोल्ड देम ओवर देयर, ठीक है. तो लेट्स देन स्टार्ट विद टुडेज सेशन, ठीक है. आज का सेशन मोस्टली ऑन डेटाबेसेस वगैरह है, ठीक है. हाउ टू कनेक्ट योर Node.js एप्लीकेशन to a database, and you can like talk with the database, ठीक है. How to make a backend where database is integrated. In the previous session we made a backend where there was no database connection, ठीक है. आज हम एक to do बनाएंगे, ठीक है. एक to do एप्लीकेशन बनाएंगे which will connect with the database, ठीक है. तो let's look at what are databases. As the definition says, databases are organized collections of data that are structured to enable efficient storage, ठीक है. So तुम्हें तो समझ में आया ही होगा, because you are CSE folks, most of you are CSE and some are BCA folks, so most of you know the idea of databases, ठीक है. तो I'm not going into deep like how how the inner structure and everything works, because I also don't know it, to be very honest, ठीक है. तो databases normally बहुत सारे types के होते हैं. SQL databases होते हैं, NoSQL databases होते हैं. Now you might have heard of vector databases also. Then comes graph databases and stuff, ठीक है. तो what kind of database are we going to use? We are going to use a NoSQL database, which is MongoDB, ठीक है. वो एक NoSQL database है. So let's understand what is SQL, like why SQL database and NoSQL database created separately, ठीक है. The main thing is SQL databases, तुम और इमेजिन कर सकते हो कि SQL databases are like spreadsheets वगैरह है, ठीक है. When you have a clear structure of the data, ठीक है, जो तुम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में देखना चाहते हो, ठीक है. To represent, to store that kind of data, SQL databases are best. और NoSQL databases क्या होता है? NoSQL databases are good for storing JSON objects, ठीक है. What is JSON? JSON is basically key and value pair, ठीक है. पिछले क्लास में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, मतलब थोड़ा बहुत ही है, JSON का टॉपिक ही छोटा ही है. Basically in JSON what happens is you structure your data according to key and a value, ठीक है. तो in this definition you can see कि it has been written कि NoSQL databases are more like a box of folders with documents inside, ठीक है. मतलब एक फोल्डर का पूरा बॉक्स है, ठीक है. और उसके अंदर डॉक्यूमेंट स्टोर्ड है, ठीक है. सो वन इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट विल बी अ JSON ऑब्जेक्ट फॉर ऑलवेज. तो दैट इज व्हाट NoSQL databases are.
क्या समझ में आया अभी तक? मतलब नो सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल डेटाबेसेस, ये क्या समझ में आया तुम लोगों को? गिव मी अ thumbs up for those who did get it. And if you want me to recap once, ठीक है, then send a +1 in the chat box. I will recap once again. thumbs up, मस्त. +1, +1. Okay. एक बात बोलो, how do you know when to use SQL or NoSQL? फिर से बताओ, समझ में नहीं आया। How do we choose? Like I think both the हाँ, like SQL and वो NoSQL is same. आएगा बाद में आएगा। Okay, great. तो ठीक है, लेट्स अगेन रिकैप सीक्वल एंड नो सीक्वल डेटाबेसेस। सीक्वल डेटाबेसेस को तुम एक्सेल स्प्रेडशीट जो होता है ना, वैसे तरह सोच सकते हो, ठीक है, कि एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड स्प्रेडशीट है जिसमें एक एक कॉलम का, एक एक रो का मतलब कुछ एक पर्पस होता है, ठीक है। those kind of data are like good in SQL databases because at that kind of data is completely structured, ठीक है। if you have a fully structured data, then go for SQL databases. if you have semi structured or unstructured data, ठीक है, then go for NoSQL database. Now in case of this to do application which we are going to build today, why am I choosing NoSQL databases other than SQL databases? Because टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू डू एप्लीकेशन ना तुम सीक्वल में भी बना सकते हो, नो सीक्वल में भी बना सकते हो। दैट्स नॉट बिकॉज इन अ टू डू एप्लीकेशन द डेटा इज वेल डिफाइंड, ठीक है। And the main reason why I am choosing a NoSQL database is because we are using MongoDB. MongoDB is a NoSQL database, and as per the syllabus of Project DevRush, the main motto is to learn MERN. ठीक है, तो M से mongoose ही आता है, mongoose से MongoDB ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड NoSQL databases, no need to worry, ठीक है। एज ऑफ नाउ ये सोच सकते हो कि SQL databases आर लाइक स्प्रेडशीट्स जिसमें डेटा कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड है, और NoSQL databases आर लाइक अ बॉक्स ऑफ फोल्डर्स, ठीक है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और वो जो डेटा होता है ना, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। यू कैन सेव दोज काइंड ऑफ डेटा इन NoSQL databases. Got it, guys? Can I have a thumbs up? Okay. Okay, great. Chalo, let's move on to the next topic. Let's look at the comparison. ठीक है, ये जो SQL databases का जो स्कीमा होता है ना, वो that is fixed and predefined, और NoSQL databases का जो स्कीमा होता है वो फ्लेक्सिबल और डायनेमिक होता है, ठीक है। As I have told you in the previous slide, SQL databases are like neatly organized spreadsheets, ठीक है। तो that is why the schema needs to be fixed or predefined. You can understand schemas are blueprints of how the data should look like, ठीक है। और ये जो डेटा स्टोरेज है SQL databases में रोज और कॉलम्स में दिखाया जाता है। सो वट एवर यू आर सीइंग राइट नाउ दिस टेबल, ठीक है, दिस काइंड ऑफ डेटा आर स्टोर्ड इन SQL databases। और NoSQL databases में की वैल्यू पेयर और डॉक्यूमेंट्स में मतलब स्टोर होता है, ठीक है। सो एज आई हैव टोल्ड यू, द डेटा इज स्टोर्ड इन की एंड वैल्यू पेयर्स। स्केलेबिलिटी, let's come to scalability for SQL and NoSQL databases. SQL databases have vertical scalability. NoSQL databases have horizontal scalability. I'll come into this a bit later, ठीक है। एंड रिलेशनशिप्स, अब तुम लोगों ने शायद SQL databases पढ़े होंगे, MySQL क्लास 12 के करिकुलम में रहता है, CBSE बोर्ड्स वाले, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स have SQL databases में relationships are like very strong. You know, like union and joins are there in MySQL,
And in NoSQL databases, they were limited. But in MongoDB right now, you can use something known as aggregation pipeline. ठीक है? तो अब रिलेशनशिप्स का जो प्रॉब्लम है ना NoSQL databases में भी, they are like doing good in relationships. And I'm talking just for MongoDB. ठीक है? वो MongoDB का जो एग्रीगेशन पाइपलाइंस एक पूरा एक टॉपिक है. ठीक है? आई विल नॉट गो into that in today's session. ठीक है? तो वहां पर तुम लोग मतलब रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकते हो MongoDB से. That is why MongoDB is so powerful as a NoSQL, even being a NoSQL database. ठीक है? अच्छा, तो अब आते हैं स्केलेबिलिटी पे. ठीक है? स्केलेबिलिटी इज a system's ability to handle increased load or demand by adding resources. ठीक है? So let's consider a scenario. Many of you, not many, I guess every one of you have somehow sometimes heard of this thing कि सर्वर डाउन है. ठीक है? डेटाबेस का सर्वर डाउन है, वेबसाइट का सर्वर डाउन है. वो क्यों होता है? वेबसाइट का सर्वर डाउन क्यों होता है? दैट इज बिकॉज इधर वो वेबसाइट जो एक वेबसाइट पे बहुत सारे यूजर एक टाइम पे आ गए. ठीक है? और ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल जो मैंने समझाया ना अभी, तो ये हो सकता है कि एक साथ बहुत सारे रिक्वेस्ट मारे गए हैं एक सर्वर पे. एक सर्वर के जो इन पॉइंट है वहां पर बहुत सारे रिक्वेस्ट एट एन इंस्टेंट मारा गया है. ठीक है? so server couldn't handle the load of so much request coming simultaneously. ठीक है? so what is scalability? वो जो सर्वर है ना, सर्वर की एक एबिलिटी होती है टू हैंडल द इंक्रीज्ड लोड और डिमांड बाय एडिंग रिसोर्सेज. ये व्हाट आर दीज रिसोर्सेज? I'll get into it. ठीक है? so that is what scalability is. ठीक है? तुम अगर एक सर्वर पे कहीं पर भी, ठीक है, एक वेबसाइट या फिर सर्वर पे बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजोगे, सो द सर्वर्स एबिलिटी टू हैंडल अ लॉट ऑफ लाइक रिसोर्सेस, ठीक है, और लॉट ऑफ रिक्वेस्ट इज द सर्वर्स एबिलिटी टू स्केल. ठीक है? सो क्या हो सकता है? मतलब मैंने in the previous slide you saw कि SQL databases, let me open the previous slide again. SQL databases have vertical scalability, NoSQL databases have horizontal scalability, and in brackets you will see vertical scalability के bracket में दिया हुआ है कि add more power, and horizontal scalability में दिया हुआ है कि add more servers. ठीक है? तो how can you like increase a system's ability to handle increased load or demand by adding resources? What can be resources? Either distribute that whole bunch of requests into different machines so that the load is being distributed, or give one particular system more RAM and more storage. ठीक है? What happens in your computer if you try to handle a very heavy game in your own computer? What do? If that game doesn't work, what do? You increase your computer's resources. तुम एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लाते हो, तुम अपने रैम को अपग्रेड करते हो. ठीक है? if your storage doesn't permit you, तुम एक्सटर्नल स्टोरेजेस बाय करते हो, राइट? that is one way. ठीक है? and the second way is to distribute that load into various systems, जो तुम नॉर्मली नहीं करते होगे क्योंकि तुम्हारे पास 7-8 तो कंप्यूटर पड़े नहीं होंगे. ठीक है? एक काम हैंडल करने के लिए 7-8 कंप्यूटर तुम्हारे पास मोस्ट प्रोबेबली नहीं होते होंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. ठीक है? वर्टिकल स्केलिंग मींस गिविंग मोर रिसोर्स टू अ सिंगल इंस्टेंस. What do I mean by giving more resource to a single instance? Let me move on to eraser again. ठीक है? Give me a minute. ठीक है? Got it. Okay, so let's say this is your server. ठीक है? और तुम्हारे सर्वर पे एक बहुत सारे रिक्वेस्ट मारा गया है. ठीक है? बहुत सारे रिक्वेस्ट आया है फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट्स.
ठीक है, एक रिएक्ट क्लाइंट है, एक नेक्स्ट जेएस क्लाइंट है, एक जावास्क्रिप्ट क्लाइंट है, एक एंगुलर क्लाइंट है, ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट से रिक्वेस्ट मारा गया है तुम्हारे सर्वर पे, ठीक है, और फॉर एवरी रिक्वेस्ट योर सर्वर हैज टू रीच टू योर डेटाबेस, ठीक है। इन व्हाट हैपेंस इन सीक्वल डेटाबेसेस, कि सीक्वल डेटाबेसेस में ये जो डेटाबेस है ना, इसका एक पर्टिकुलर सर्वर होता है, ठीक है। दिस डेटाबेस इज प्रेजेंट इन ओनली वन मशीन, ठीक है, सिर्फ एक मशीन में ही ये डेटाबेस एग्जिस्ट करता है। सो टू हैंडल द लोड ऑफ दिस डेटाबेस, व्हाट कैन यू डू, यू कैन डू, यू कैन इंक्रीज रैम, you can increase the storage, ठीक है। if it is running some sort of ml model, ठीक है, then you can increase your gpu power, ठीक है। ये सब करके तुम अपने एक, what do you do, what is the point of increasing ram, increasing storage, increasing gpu and stuff? Basically what happens is you are giving one server more power, ठीक है, so that it can handle a lot of requests. Okay, got it guys? Can I get a thumbs up? If someone didn't get it, you can write a +1 in the chat and unmute yourself to tell me कि कौन से specific part है you want me to repeat. Yeah, if there is someone, I'll wait for a bit. Okay, no one is giving a +1. Why server down? Okay, server down basically होता है क्योंकि let's say you have a server, ठीक है, server, so you have a server. हमने जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि क्लाइंट sends some request to your server, right? The server processes the request and it responds back to the client. Now this processing the request can be anything. Processing the request can be sending another request to a server, एक different server पे request मार रहे हो, वो भी हो सकता है। Processing the request can be running a sort of code, ठीक है। Processing the request can be anything, and by anything I literally mean anything, ठीक है। So server down कब होता है कि when you are running, when you are sending a request to your server, let's say this is your client, this is your client, ठीक है, तुम क्लाइंट से सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है। now let's say your server's capability of handling a request is like let's say 100, you can, your server can handle 100 reads per second, और मतलब तुम्हारा जो कंप्यूटर है वो केपेबल है कि एक टाइम पे वो जो पर्टिकुलर फंक्शन है जो प्रोसेसिंग के टाइम पे होगा ना, सो लेट्स से योर सर्वर इज केपेबल टू हैंडल 10 और 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट यू आर डूइंग इज योर क्लाइंट इज सेंडिंग like 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। अब क्या होगा, योर सर्वर विल नॉट बी एबल टू हैंडल दैट, राइट? इट्स बेसिकली लाइक कि तुम एक टाइम पे लेट्स से एक टाइम पे तुम 4 पानी पूरी खा सकते हो, ठीक है। इफ someone gives you 40 पानी पूरीज at a same time, will you be able to grasp it? No, that's what happens to the server. तुमको बुखार होगा और सर्वर डाउन हो जाएगा, ठीक है। इफ यू, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ईट मोर, यू फेस हेल्थ प्रॉब्लम्स, लाइक, और सर्वर का कोई हेल्थ नहीं होता ही नहीं है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन सर्वर्स, दे जस्ट शट डाउन, ठीक है। वो जब लोड हैंडल नहीं कर पाते शट डाउन हो जाते हैं। एंड यू माइट ऑल्सो हैव एनकाउंटर कि तुम्हारा पीसी, इफ यू हैव अ लैपटॉप, ठीक है, तो यू माइट हैव सीन कि एक टाइम पे तुम्हारे लैपटॉप का जो फैन बहुत जोर से मतलब चलता रहता है, बहुत जोर से हवा निकलता है, और देन इट शट्स डाउन ऑटोमेटिकली, ठीक है, कोई अगर सीपीयू इंटेंसिव काम हो। सो दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन व्हेन द सर्वर इज डाउन। गॉट इट? ओके, ग्रेट।
So this is horizontal scaling that was I am telling which I was telling you कि तुम्हारे सर्वर जब एक डेटाबेस को रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, तो देयर आर टू वेज टू हैंडल द रिक्वेस्ट. वन इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कि वन इज वर्टिकल स्केलिंग, सॉरी नॉट हॉरिजॉन्टल, वन इज वर्टिकल स्केलिंग कि तुम एक सिंगल सर्वर को बहुत सारा पावर दे दो so that you can like so that the request can be handled. ठीक है, वो जो लोड वो हैंडल कर सकते हैं. ठीक है. एंड व्हाट इज वर्टिकल स्केलिंग कि लेट्स से यू तुम्हारे सर्वर से बहुत सारे रिक्वेस्ट जा रहा है and you distribute this load to different servers. So now the database is not only in one server. The database is in this server 1, server 2, server 3, server 4. ठीक है. तो क्या हो रहा है, let's take the example of पानी पूरी. ठीक है, तो तुम्हारे पास तुम्हें जब 40 पानी पूरी दिए गए हैं, what you do, bring 10 friends of yours who can eat 4 पानी पूरी at the same time. ठीक है, तुम वो जो अपना जो लोड है ना पूरा, वो तुम 10 लोग बांट रहे हो. तो दैट इज व्हाट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज. अंडरस्टैंड इट लाइक दैट. ठीक है, कि तुम वो जो लोड जो डेटाबेस के सर्वर पे आ रहा है, वो लोड डिवाइड हो रहा है विद इन अमंग्स डिफरेंट सर्वर्स. ठीक है, दिस इज व्हाट नो सीक्वल डेटाबेसेस डू नॉर्मली. ठीक है. So if you go when you in the future when you if you go on to DevOps and deployment stuffs, ठीक है, तब तुम समझोगे कि it's always good to have a a SQL database if your requests are low, and it's always good to have a NoSQL database when your requests can be high, because this is initial when in the initial phase this is very less it takes very low cost, because एक ही सर्वर तुम्हें डेटाबेस का एक ही सर्वर is needed for your database, right? But in future ये जो RAM storage ये जो increase करोगे ना, that will become costly for your servers. ठीक है. And when you are using NoSQL database, it's slightly costlier in the at the first time, but अगर बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं तुम्हारे डेटाबेस पे, तब इट्स गुड कि तब यू कैन इजीली अपग्रेड, बिकॉज वो जो लोड है ना, वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है. Okay, that is what horizontal and vertical scaling is. As you can see in the picture, ठीक है, this is a vertical line. ठीक है, this is what, so this main thing, increasing RAM and increasing storage of one particular server, is vertical scaling, and distributing the load of your database to different servers is horizontal scaling. Got it, guys? Can I get a thumbs up? Okay, great. If anyone has any problem, I'm saying again, ठीक है, just unmute yourself, speak your problem. ठीक है, I don't have any problem in repeating again. ठीक है, तो don't worry. If you have faced any problem in any part, or if you don't understand anything, either unmute yourself and tell me, or you can write it in the chat box also. Okay? Got it, guys? Okay, great. चलो फिर ये सर्वर इसमें आ जाते हैं. ठीक है. Now what are we building today? We will build a simple to do application with MongoDB connection and stuff. ठीक है, एक फुल फ्लेज्ड, मतलब तुम्हारे सेल्फिश यूज केस के लिए एक टू डू एप्लीकेशन बनाओगे. ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड्स को मत दिखाना वो. तो चलो कोडिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, बहुत तो बात कर लिया. What is CRUD? CRUD is create, read, update and delete. ठीक है, the full form of CRUD is create, C for create, R for read, U for update, D for delete. ठीक है.
सो बेसिकली हम एक सिंपल टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे वो जहां पर हम लोग टू डू क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। लेट मी स्टॉप शेयरिंग एंड get comfortable with VS Code right now. Okay, you might have different sort of ways to open VS Code. मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फोल्डर पे जाता हूँ, आई ओपन माई टर्मिनल बिकॉज आई एम यूजिंग लिनक्स। ठीक है, और आई यूज द कमांड mkdir टू मेक अ न्यू डायरेक्टरी। द डायरेक्टरी नेम इज एज ऑफ नाउ आई एम गिविंग टू डू फुल स्टैक। ठीक है, क्लियर। और cd to do full stack and do code dot। ठीक है, this will open Visual Studio Code in the to do full stack folder. What are the other ways? Let me show you the other way also. ठीक है, just open VS Code। ठीक है, VS Code open हो रहा है। ठीक है, now you will see the screen। अरे यार ये सब क्यों खुल रहा है, रुको रुको एक मिनट। हाँ, you will see this screen। ठीक है, if you do open folder and then you can select your folder which you want to open, click on open, your folder will be opened। ठीक है, are we here? Like how many of you have opened the VS Code, opened your VS Code in your own machines? How many of you have done till this point? Okay. Great. Is there, if there is someone who has not opened and wants me to wait, give me a -1 in the chat, or if you need help also, unmute yourself, no problem with that। ठीक है, is there anyone who is facing any problem to open this VS Code as of now, which shouldn't happen by the way? चलो कोई नहीं है, good। Okay, so in the first class, in the first session that I took, I told you कि it's always good to separate the server and the, अरे यार, and the client। ठीक है, आज तो हम client side में कुछ बना नहीं रहे हैं। ठीक है, तो let's delete the client side as of now। I will go on with the convention। मैंने server नाम का एक folder बना लिया है, and in the terminal of VS Code you can open your terminal from here also, control shift tilde, the key just below your escape key। ठीक है, अगर तुम कंट्रोल टिल्डे भी मारोगे तब भी टर्मिनल खुल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, and what you can do is, let me remove this server। what you can do is mkdir server। ठीक है, अगर तुम ये करोगे it will do the same thing, it will create a new folder। ठीक है, और फिर cd to that server। ठीक है, done। now let's jot down, let's see what are the things that we have to do। I probably have written them in SKEPSIS। okay, great, it's written। ठीक है, तो npm init y ये क्यों होता है, किसको नहीं मालूम, तो I'll recap it once again। if there is someone who wants me to recap why npm init y, tell me in the chat box। ठीक है, give me a -1 in the chat box। I will explain you once again why npm init y। ठीक है, if there is someone, सही कर। anyone more? एक बार टर्मिनल वाला फिर से प्लीज, रुको दिखाता हूँ। ओके, एकदम फुल स्क्रीन, एकदम मतलब टर्मिनल को जूम इन करके। अच्छा, ये वाला, या फिर ये टर्मिनल वाला तुम पूछ रहे हो, ओपन इन टर्मिनल ये पूछ रहे हो क्या सतीश? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ यार, तुम तो मुझे जानते हो। VS कोड वाला टर्मिनल, ठीक है रुको।
Okay, let me start from the basic. Let me start again from start. ठीक है, ऐसा खुला हुआ है टर्मिनल, तुम यहाँ से खुल सकते हो, खोल सकते हो, सॉरी मेरा हिंदी खराब है, ठीक है, जस्ट मैनेज कंट्रोल शिफ्ट टिल्डे, इफ यू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट टिल्डे इट विल ओपन अ न्यू टर्मिनल, ठीक है, a new terminal has been opened. Now if you do mkdir server, it will make a new directory named server in your root directory. Then what you have to do is change your directory to server. That is what cd does. Cd is change directory to server, ठीक है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि आई वॉज इन टू डू फुल स्टैक पहले, देन आई एम इन, नाउ आई एम इन टू डू फुल स्टैक स्लैश सर्वर, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन कंफर्म कि यू आर इन द करेक्ट डायरेक्टरी। गॉट इट सतीश? ग्रेट ग्रेट। और किसी ने कोई कमेंट किया था? npm, ओके। चलो तो what we are creating, we are basically creating the backend of an application, right, in javascript, ठीक है। और ये हम कैसे करने वाले हैं? through a framework named express.js. express.js is a framework which helps you to create backend servers, ठीक है। तुम सर्वर मतलब http की नाम का एक इंटरनल मॉड्यूल है, ठीक है। इंटरनल मॉड्यूल मतलब नोड जेएस के अंदर कुछ फंक्शंस, कुछ फाइल्स रिटन, there are some functions and files written inside the node.js code which the node.js developers has written. Inside that there is something known as http. Using http also you can create your own servers, but that's unnecessary, very long. To just initialize a server with the http module, it takes a lot of effort and we have to write a lot of code, ठीक है। So that is why people don't use http now, mostly use express, and there are also other frameworks for full stack for backend development, ठीक है, nest.js being one of them. So why do I do npm init? Why? To initialize a new project, ठीक है। if you skip the dash y, ठीक है, अगर if you do npm init and press enter, you will have to give the names and stuff, ठीक है। So the package name is, let's say, to do backend. This time I didn't do npm init y, as you have seen. I did npm init, ठीक है। This is to do backend. Version is 1. Description, let's leave it empty. Entry point, let's leave it index.js, ठीक है। टेस्ट कमांड, लेट्स लीव इट एम्प्टी। गिट रिपोजिटरी, लीव इट एम्प्टी। कीवर्ड्स, लीव इट एंट्री, ठीक है। ये जो मैं लीव इट एंट्री मार रहा हूँ ना और एंटर मार रहा हूँ, दैट इज व्हाट npm init y डज बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तुम जब डैश y फ्लैग को सिलेक्ट करते हो, whenever you write npm init dash y, all of these are done by default, ठीक है। मतलब टू डू बैकएंड तो मैंने लिखा है, it the name will be server itself, ठीक है। तो तुम अगर npm init y करोगे तो it just initializes a package.json, ठीक है। this is where you bundle up your application, ठीक है। तुम जो पूरा एप्लीकेशन लिखोगे, ठीक है, where you will write the scripts and stuff, what are the keywords, where are the author, like the additional configurations of your application are present in the package.json file, ठीक है। the name of your your backend, as of now it will be, I will name it to do backend, ठीक है। the version I will set it to 0.0.1. the main file I will leave it to index.js. It doesn't matter really, because the main thing that matters is how you start the project, ठीक है। that matters more than the package.json, ठीक है। but in the previous class we created index.js inside the root directory also. In this case our root directory is the server directory, not the to do full stack, ठीक है, क्योंकि we are not writing our client side right now. So the start script
let's skip it as of now. I will show you the start script later. And these are the additional metadata which has been assigned. Got it? What npm init y does? Got it, guys? Give me a thumbs up. Ah, Shaikat has given thumbs up. Ishita and Akash, I want one from you also. Okay, how many of you are right now? How many of you have created this package.json file? How many of you have? Is there anyone who is not at this point, like where I am right now? Okay. Is there anyone who didn't do npm init y? Just I just want to make sure that we both of us are like in the same page. Okay. Has everyone created an empty, has initialized an empty project of Node.js? Can I get a thumbs up, guys? Ayush, Satish. One from the others. What about the others? Is there anyone who has faced any problem? Go wrong, go wrong, go gosh. You want me to recap? Uh, okay, let me do it once again. Okay, let's move it to trash. So, what did I do? Let's delete this. Let's exit from the terminal. Okay. Open your VS Code. Go to new terminal. Okay. Create a new folder named server. CD to server, and just do npm init -y. Okay. And when you open your server, you will see package.json. Okay. When you see package.json, what is there? The name. I will set the name of to do app. The version as of now, let's leave it at 0.011. That's my convention. You can use anything you want. If you want to leave it like 100.0.1, 0.0, you can also leave it there like that. Okay. I will leave it at 0.011. Okay. You can specify the additional keywords, whatever you want. Okay. Basic to do, full stack. You can specify your keywords. Write down your name as the author because you are creating that project. Okay, what is this? And these are like the additional metadata which are not really very important until unless you are like deploying it in very production grade environments. Got it? npm is not recognized. Do you have node installed, Gourango? Do you have node installed in your system? That's why. What system are you using? Are you using Windows 11 or Windows 10? 11. Okay, good. Just go over here. Okay. Go to Google and search Node.js install for Win 11. Okay. Once you do that, अरे यार ये नहीं, Node.js install ही मान लो सिर्फ. ठीक है. And this is very simple. ठीक है. You go to Node.js, download the Node.js and just run it. Just like you download the game, download any game in your computer. Yes. Go by the default convention and it will work good. Okay. Or otherwise, what you can do is go to github.com/code spaces. Okay. If you go and create a blank template, this will open up a new VS Code environment. Okay, just like this. And from there also you can follow. But this takes up a lot of time in my machine. And in many machines, it takes up a lot of time just to spin up a VS Code instance in GitHub code spaces. So that's why we are doing it in our local system. Okay.
एंड द अदर्स बाकी का सब सॉर्टेड है, बाकी लोगों का? ओके ग्रेट। Let's okay. So today what we will do, we will not create the index.js file inside the server folder itself. Okay, let's just since we are not creating any client, let's just do a code dot so that the root directory is the server directory. ठीक है, over here you can see the root directory is to do full stack, and over here you can see the root directory is server. ठीक है, so that we don't have to change the terminal, change our terminals again. We don't have to do cd server every time. ठीक है, just do this, just do a code dot so that you can, so that the root directory for your Visual Studio Code workspace is the server directory. ठीक है, or if you don't do, that's completely fine. अच्छा, तो what we will do now, let's install, let's see the second step. ठीक है, ये तो हो गया हमारा, npm init y is done. ठीक है, configure the package.json is done right now. No, it's not done, in progress. Sorry, I have missed many steps in between. So wait, package.json in progress, absolutely. So inside the package.json, ठीक है, the main file is set to index.js. You can leave it anything. What do these scripts do? Do some research, okay, but as of now let's leave it to what it is. Let's create a bunch of folders as of now. First is the source folder, and this is the convention that is being used right now to create full-fledged production grade backend applications. So I will follow that. In most of the cases, many people use a different approach. I use a different approach. You might use a different approach in future. Okay, but as of now, let's stick to the convention that I am showing you because it will help you. Okay, let's change the type to module.js. Module, not setting the type to common.js. ठीक है, what this does, do your own research. ठीक है, about this DYOR, basically do your own research. ठीक है, because I have told this in the past class, in the previous class also. So, and it's not that of a big deal. Inside this, create an index.js file, create an app.js file. ठीक है, और बहुत थोड़ा बहुत फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे तुम्हें. ठीक है, so I will use the command line so that I can make the folders fast. ठीक है, I will cd to source and create these folders, mkdir. For handling the routes, I will create a different folder. For handling the controllers, I will create a different folder. For handling the models, I'll create a different folder, and another folder will be named db to like do the connection with the database. ठीक है, now when I press enter, you will see कि controllers, db, models, routes सारे के सारे folders बन गए हैं. ठीक है, has everyone done till now? Are we on the same page, guys? Can I have a thumbs up? एक ही नहीं किया है क्या बाकी का? एक मिनट, ठीक है, वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं. प्लीज फोल्डर कौन सा बनाया है दिखाओ. मुझे समझ में नहीं आया, पर आई एम शोइंग यू द फोल्डर्स. ठीक है, सर्वर के अंदर, सर्वर ये जो मेन फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर सोर्स फोल्डर है. आफ्टर यू डू npm init y, इट विल क्रिएट अ package.json. ठीक है, और उसके अंदर एक सोर्स फोल्डर है. सोर्स फोल्डर के अंदर दो फाइल है एज ऑफ नाउ, index.js, app.js, दो फाइल्स. ठीक है, एंड इनसाइड दैट फॉर क्रिएटिंग राउट्स देयर इज अ डिफरेंट फोल्डर. मॉडल्स के लिए एक डिफरेंट फोल्डर है, डेटाबेस के लिए एक डिफरेंट फोल्डर है, कंट्रोलर्स के लिए एक डिफरेंट फोल्डर है. गॉट इट आयुष? And the others?
if you are like confused with the folder structure, then leave it. ठीक है, मैं भी डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, डोंट वरी, वी विल मेक द फोल्डर्स ऑन द गो. ठीक है, लेट्स डिलीट. छोड़ो, छोड़ ही दो भाई. ठीक है, बस सोर्स के अंदर app.js और index.js बना लो. Are we on the same page? Ayush, please don't delete the folders. If you have deleted, it's okay, but don't delete the folders. So for those who have already created the folders, keep it. It will help. You won't have to do an extra step in further down the tutorial. How to change directory to previous one? क्या क्या मतलब तुम टू डू फुल स्टैक में जाना चाहते हो क्या सतीश? ओ सॉरी, सैकत. डू cd डॉट डॉट एंड डू कोड डॉट. ठीक है. ओ सॉरी, सॉरी, तुम टू डू फुल स्टैक में जाना चाहते हो. आई वाज इन द सोर्स डायरेक्टरी, सॉरी, माय बैड. सो सेम थिंग, cd डॉट डॉट टू गो टू द प्रीवियस डायरेक्टरी एंड कोड डॉट टू ओपन योर vs code in the previous directory. Got it? Now in your previous directory you will be able to see कि app.js और index.js created है, क्योंकि हमने यहाँ पर create किया है वो सब. तो यार ब्लैक बॉक्स हर बार क्यों खुल जाता है? Got it, Shaika? Great. So as of now, we are all in the same page. Okay, and shall I continue, guys? Can I have a thumbs up? आयुष ने किया है, शेखर ने किया है, दिया ने किया है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आयुष, आयुष, सलमान, सतीश हो गया तुम्हारा? मतलब तुमने 1 मिनट के लिए. ठीक है, गुड गुड गुड. चलो फिर लेट्स स्टार्ट कोडिंग. Now let's install. नहीं. Let's at first create a .env file. If you remember, in the not inside the source folder, in the root direct in your server folder, create a .env file. ठीक है. If you remember the previous class, मंजीत दानेश वो जो जेमिनाई का जो API की है वो एक .env फोल्डर में रखा था, क्योंकि .env will hold all of your secrets. ठीक है, जो तुम प्रोडक्शन में पुश नहीं कर सकते. ठीक है, दिस फाइल विल कंटेन ऑल ऑफ योर सीक्रेट वेरिएबल्स. एज ऑफ नाउ आवर सीक्रेट वेरिएबल विल बी MongoDB URI. ठीक है, और URL, वट एवर यू लाइक. आई प्रेफर URI, सो मैं URI दूंगा. So what will you do? Let me recap once again. You will, in your server folder, you will create a .env file. Inside the .env file there will be a Mongo URI वेरिएबल. ठीक है, और तुम जो भी नाम चाहो वो सब दे सकते हो, कोई बात नहीं. ठीक है, एंड जस्ट डू एन empty quotes or leave it empty, whatever you like. ठीक है, once you do that, let's go and fetch the MongoDB connection string. इसने चैट कट किया क्या? URI. अरे तुम कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पर. तुम सुपरमैन भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, सुपरमैन. ठीक है, और यहाँ पर तुम DB डेटाबेस स्ट्रिंग भी लिख सकते हो. ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें देयर इज नो प्रॉब्लम. यू कैन नेम योर एनवायरमेंट वेरिएबल्स वट एवर यू वांट. ठीक है, बिकॉज दिस इज योर प्रोजेक्ट, यू कैन ऑल्सो नेम इट बाय योर नेम. ठीक है, मैं मोंगो URI प्रेफर करता हूँ क्योंकि इट्स जस्ट अ कन्वेंशन. ठीक है, या एब्सोल्युटली दैट्स द नेमिंग पार्ट. ओके, तो let's go fetch the connection string from MongoDB. ठीक है, what you have to do is go to MongoDB Atlas. Let it open और open MongoDB. ठीक है, now sign in.
ठीक है। अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, ये जो लॉगिन का पेज है ना, ये मैं तुम्हें लिंक दे देता, गो टू दिस लिंक, ठीक है, और ओवर हियर यू कैन लॉग इन विथ योर क्रेडेंशियल्स, आई विल लॉग इन विथ माइन। ठीक है, in your case this might not be present, ठीक है। Okay, let me do one thing, let me stop presenting and sign in with a different account, ठीक है, एक नया account, so that I can show you what to do. So guys, just proceed to sign in with sign in your MongoDB, ठीक है। MongoDB Atlas पे जाके एक नया अकाउंट बना लो। if you don't have an account, just do a sign up, ठीक है, कोई बात नहीं। I am doing my part, let me do that। चलो, we create a new account। How many of you have already signed up right now? Can I have a thumbs up? Because I am signing in, so okay, I use Sekat has already done it. Great, great, great। This page, let me share my screen। Okay, I'm sharing। You have reached this page, ठीक है। How many of you have reached this page? You will select M0 because obviously you want it to be done free, ठीक है। Once you select M0, name your cluster anything, cluster 0, Superman, anything you want, ठीक है, and create a deployment, ठीक है। The region will be set automatically, ठीक है। Once you are deploying, ठीक है, this is your password and your database username, ठीक है। You can copy this password because it will keep in handy, but even if you don't, no need to worry about that, ठीक है। Just close it, I am closing it as of now, ठीक है। So this is deploying your cluster, ठीक है। Your cluster is being created। Till then what you have to do is go to network access, ठीक है, और add an IP address पे जाके what you have to do is in the access list। अच्छा, पहले पहले काम करो, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। Now add an IP address। The IP address will be 0.0.0.0/0, which will allow every IPv4 addresses, ठीक है। Do confirm। Now go to database access, ठीक है, and add a new database user। I am right now giving an auto-generated secure password, and I will, okay, let's not do that right now, we will do that later, ठीक है। If someone has taken a screenshot of my database cluster, ठीक है, जो मैंने दिखाया था, your congratulations, but I don't use this account and I will never use this account anyways, ठीक है, कोई बात नहीं अगर तुमने लिया है स्क्रीनशॉट। So your cluster is being created, ठीक है। Till then, can I get a thumbs up for the folks who have did this till this part of adding a new IP address for your network access वाला एक बार बताना। Go to network access, create an IP, go to add an IP address, ठीक है। रुको मैं डिलीट मारता हूँ पहले। Add an IP address मारो, फिर ठीक है, फिर एक्सेस लिस्ट एंट्री पे 0.0.0.0/0 और कंफर्म।
This is basically what you have to do. ठीक है, got it, got it. And others, for the others, have you created this net, like have you configured your network access tab? Can I get a thumbs up? बस एक नहीं किया क्या? बाकी 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 के लोग? If you are facing any problem, okay, एक बार दोबारा बताना. What you have to do is go to cluster. Once you create the cluster, ठीक है, this will show कि creating cluster, ठीक है. Then you can go to network access while your cluster is being created. Go to network access, click here, add an IP address, and over here write 0.0.0.0/0, ठीक है, और फिर confirm में click कर दो. I am giving you the IP. What you have to do, 0.0.0.0/0, ठीक है. ये नेटवर्क पे अपने अलाउड IP एड्रेसेस पे ऐड कर लो, ठीक है. Once you are over here, ठीक है, okay, once you are over here, then you can get your connection string, but I need you guys to tell me कि you are over here, ठीक है. or if you are facing any problem, you can tell me, I will help you out. Is there anyone who is facing any problem? You can write your problem or comment a -1 as of now. Then I can tell you to present your screen and you can show me. Anyone facing any problem? Shall I proceed, guys? Can I have a thumbs up? Satish ने दिया है. Great. Others? -1. आयुष, क्या क्या दिक्कत हो रहा है भाई? तुम बताओ मुझे, कोई बात नहीं. कैन भैया यू वो unmute yourself? क्या भैया वो क्लस्टर के जाने के बाद वहां से कहाँ जाना है बोल रहे हैं? तुम अपना स्क्रीन प्रेजेंट करो, वो अच्छा होगा आई गेस. स्क्रीन प्रेजेंट कर लो और वो पर्टिकुलर टैब प्रेजेंट करो, फिर आई विल हेल्प यू. ओके, नाउ क्लिक ऑन बिल्ड अ क्लस्टर. वो वहां पर एकदम टॉप पे जाओ, M0 सिलेक्ट कर लो क्योंकि दैट्स फ्री, ठीक है. एब्सोल्युटली परफेक्ट. अब तुम क्रिएट डिप्लॉयमेंट में क्लिक कर दो, ठीक है. क्लिक ऑन क्रिएट डिप्लॉयमेंट. ये तुम कॉपी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई बात नहीं. यू कैन क्रॉस इट, यू कैन. नहीं, ये सब कुछ नहीं. हाँ, बस काट दो. और फिर नाउ गो टू नेटवर्क एक्सेस, ठीक है. नीचे, हाँ, डेटाबेस एक्सेस के नीचे ही है नेटवर्क एक्सेस, ठीक है. नाउ डिलीट दिस डिलीट दिस एंड क्लिक ऑन ऐड एन IP एड्रेस, ठीक है. और यहाँ पर 0.0.0/0 exactly, confirm. Now go to clusters once again.
In a while you will be able to see what I am seeing in my screen right now. ठीक है? Okay. Got it? Good. Okay, great. How many of you are right? How many of you can see this screen? Please confirm so that I can like proceed through. ठीक है? Or if you want me to proceed, just give a thumbs up. ठीक है? सतीश, आयुष कुमार दास, बाकी का बाकी सब लोग. If do you guys want me to wait? If there is someone who wants me to wait, give a -1. Otherwise, I'll just proceed. Okay, no -1, so I'll just proceed. ठीक है? कोई बात नहीं. Now click on connect. ठीक है? When you click on connect, you will see this. Okay, before clicking on connect, ठीक है? Before clicking on connect, go to database access. Click on add new user, database user. ठीक है? और फिर give your username और give your password. ठीक है? एक यूजर नेम और एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लो फॉर योर यूजर. ठीक है? और ये जो यहाँ पर डेटाबेस यूजर प्रिविलेजेस है, यहाँ पर क्लिक ऑन ऐड बिल्ट इन रोल और यहाँ पर रीड राइट टू एनी डेटाबेस एंड क्लिक ऑन ऐड यूजर. ठीक है? देन यू विल बी एबल टू सी योर यूजर नेम and your user has been added and the MongoDB role is set to read write any database @admin. Okay, can I continue, guys? Do it and just confirm me with a thumbs up. What was the role again? The role was read write to any database. When you want me to proceed, please send me a thumbs up. Like, not me. Just give a thumbs up in the chat box. Satish says, Saikat, great. Anyone wants me to wait? Give me a -1. If there is anyone who wants me to wait. Okay, I'll wait for 5 seconds. Okay, great. So let me present my entire screen now and show you what you have to do. Okay, so now if you go to clusters, click on connect. ठीक है? फिर go to compass. ठीक है? Now copy this string in your environment variable file. ठीक है? env file. और यहां से ये स्लैश हटा दो या फिर स्लैश के बाद तुम जो डेटाबेस का नाम देना चाहते हो. ठीक है? एज ऑफ नाउ मैं तो नाम देना चाहता हूँ टू डू बैकएंड. ठीक है? वो नाम देना चाहता हूं मैं, तो मैंने दे दिया. और यहाँ पर जो डेटाबेस का जो पासवर्ड राइट नाउ जो सिलेक्ट किया है तुम लोगों ने, वो तुम दे दो. मैंने पासवर्ड दिया था roy01. ठीक है? तो मैंने वो दे दिया. गॉट इट गाइस? व्हाट यू हैव टू डू? और पासवर्ड कौन सा है पता है? मतलब ये जो डेटाबेस एक्सेस पे जाके तुमने जो इस यूजर का जो पासवर्ड दिया था ना, वो पासवर्ड दे दो. ठीक है?
I gave my password as Roy01 and this was my cluster name and stuff. ठीक है? Do it and you will be good to go. ठीक है? If you have done till now, give me a thumbs up. MongoDB कॉम्पस इंस्टॉल करना है क्या? नहीं कुछ नहीं इंस्टॉल, वहां पर जाते ही नहीं है, मतलब लेट्स जस्ट स्टिक टू एटलस. ठीक है, कॉम्पस इंस्टॉल नहीं करना. एंड यू कैन क्लिक ऑन ब्राउज कलेक्शन. ठीक है, भैया यहाँ पर वन रोल प्रिविलेज दिखा रहा है जब ऐड यूजर कर रहे हैं. क्या वन फिर से रोल और स्क्रीन प्रेजेंट करो ना, प्रिविलेज. कोई बात नहीं. स्क्रीन प्रेजेंट करो फिर दिखाओ, कोई बात नहीं. ये दिखा रहा है. हाँ, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन अ बिट. ठीक है. अब ये जो बिल्ट इन रोल है ना, यहाँ पर ऐड बिल्ट इन रोल, हाँ यहाँ पर क्लिक करो, सिलेक्ट रोल पे क्लिक करो एंड नाउ रीड एंड राइट टू एनी डेटाबेस, नॉट एटलास एडमिन. ठीक है, अब ऐड यूजर. गॉट इट. और ये जो यूजर नेम है, इट्स रिकमेंडेड कि तुम यूजर नेम हमेशा मतलब लोअर केस में रखो. ठीक है, Okay. It's always recommended. You can delete this user and create a new user again. ठीक है, just username को lower case में रखो. ठीक है, that will help you. Okay. Add a new database user. You can give your description or leave it empty also, no worries. Add built-in roles, select role, read and write. Perfect. Now go to clusters. Go to clusters and click on browse collections. Sorry. Click on connect. ठीक है, compass. Now copy that connection string. Exactly. Copy that connection string and paste it in the .env file of your VS Code. Open your VS Code. That .env file, exactly. That's where you have to paste it. Paste that. Perfect. Now replace your DB password. Ayush, replace your DB password with the password that you have set. ठीक है? In this portion, you will see your DB password. ठीक है? यहाँ पर अपना पासवर्ड लिख दो. ठीक है? Okay. कर दिया. So guys, shall I continue? Hello. Okay, great. Okay. In the previous day, we did everything in the index.js file, but today we will initialize our application in the app.js file and start the application from the index.js file itself. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर database connection भी included है. Okay, so this part is done. This is done. Then the next part is done. Finding the connection string. We have set the connection string to the environment variable.
Now we will install the dependencies. What are the dependencies that we are going to install? We will do npm I or npm install, and if you have yarn or bun, do anything. I'll stick with npm I. npm I express for creating the backend, mongoose to interact with the MongoDB database. ठीक है, mongoose is for interacting with the MongoDB database. Then I will install .env. ठीक है, this is the exact package name. ठीक है, .env, this is the exact package name. ठीक है, now when I press enter, it will install the packages in the package.json gradually. ठीक है, it takes a bit of time in my machine, so I normally use bun for that. I use bun install instead of npm to manage my packages. अरे यार, to do full stack में कर दिया यार, sorry. cd server. ठीक है, now I am in the server folder. When I do clear, and now I can do npm I, all of this. ठीक है, now you can see .env mongoose express as the dependencies, and the node modules folder has been created. ठीक है guys, so installing dependencies are partially done. I'll tell you why it's partially done. So let's just do a quick recap of what we did till now. We configured our initial project. We configured the package.json of our project. We found out the connection string so that we can connect our server to our MongoDB database. And we have kept the connection string safely in the environment variable, considering no one has copied my credentials. And we have installed some dependencies, which are Express, Mongoose, and .env. ठीक है? Let's now talk what is Mongoose. Mongoose is basically a library which simplifies interacting with MongoDB databases by providing schemas, validations, and methods for defining and managing data. Basically, what it helps you is to it simplifies interacting with MongoDB database. Just remember this part. ठीक है? ये सब हटाओ, जरूरी नहीं है ये सब. ठीक है? It simplifies interacting with MongoDB database. ठीक है? Got it, guys? Can I have a thumbs up? And if anyone wants me to recap, then also you can tell me. No problem with that. भैया वो कमांड क्या बताया? npm I express. I am giving you the command. No problem. npm I express mongoose and then .env. ठीक है? Let me tell you. Let me do a quick introduction. Let me tell you in brief what these are. Express is basically for creating our HTTP backend server. ठीक है? What is HTTP? It's Hypertext Transfer Protocol. It's the protocol through which we can interact with the client and the server. ठीक है? That is a protocol. There are also other protocols. There are WebSockets protocols. There is WebSocket protocols. Then other protocols include WebRTC. There are many protocols. ठीक है? SMTP is also one. You might have heard that, SMTP. So Express is basically to create an HTTP backend. ठीक है? Mongoose is to interact with the MongoDB database. ठीक है? So we have installed all of these as of now. We have installed these packages. Now create the connection to the database. What do you have to do at first? We will have to create a folder named DB. Inside the DB folder, you will have to create an index.js file, or you can name anything, whatever you like. ठीक है? Inside the source folder, there will be a database folder. Inside the database folder, there will be an index.js file. ठीक है? Then what you have to do is import mongoose. Done. Then what you have to do is create a function const connect db. ठीक है? This will be an async function. ठीक है? Inside this there will be a try catch block. If there is an error, ठीक है, then I will console log the error.
Mongo connection error. Mongo connection error, and over here I will log the error. Okay, and let's look at the documentation of MongoDB to connect to our MongoDB database. Okay, for of mongoose docs. Search this, you will get to mongoose.com/docs. ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ कि npm install mongoose to install mongoose from the command line. ठीक है, अब you will have to create a function to connect to your MongoDB instance. ठीक है, let me console log at first कि creating connection to your Mongo instance. ठीक है, you can do any console log whatever you like. ठीक है, then I will do const connection, let's leave it con. ठीक है, await mongoose dot connect. ठीक है, and after mongoose dot connect there will be MongoDB the connection string. ठीक है, यहाँ पर it's written. So where is our connection string? Our connection string in process.env dot the variable name by which you saved. ठीक है, the variable name is MongoDB, Mongo URI as of now for my instance. So once this connection is created, you can do a console.log. ठीक है, and you can log the message MongoDB connected con.connection.host. It will show the host of the connection. Basically it will log out this part, I guess. ठीक है, it will log out this part, the host of the connection. Got it? Once you have created this till now, till this, let me walk you through the code once again. ठीक है, we are importing mongoose at first. ठीक है, oh, और यहाँ पर you will have to do a process.exit. ठीक है, और status code will be 1. What this does is, if there is any error, this will directly trigger the exit process. ठीक है, let me walk you through the code. We have imported the mongoose module to connect with the database. This complete function is a helper to connect to our Mongo instance. ठीक है, inside the try block there are 3 simple lines which will tell ki console log creating connection to your Mongo instance. This then we will create the connection. ठीक है, this is the main line actually. This is the main line. ठीक है, these are the previous and the next one are just console logs. ठीक है, and this will log out the host of the connection. And if there is an error, it will log out, it will console log the error, and the process will automatically exit. ठीक है, now we have to export this. ठीक है, let's do a default export. ठीक है, or you can do export const also. Since there is only one function in this entire file, I will keep only one function in this entire file, so I will do export default connect db. ठीक है, so till now has everyone followed till now? Screen नहीं दिख रहा. Is everyone facing the same problem? नहीं, स्क्रीन तो दिख रहा है. सतीश थोड़ा एक बार जो मीट है लीव करके फिर से ज्वाइन करो. उसने आई गेस लीव किया है. हाँ, उसने लीव किया है. .env से थोड़ा सा हेल्प कर दो ना. क्या फिर से बताओ. .env से यहाँ पर लिंक कॉपी करते हैं, कनेक्ट वाला लिंक कॉपी करने वाला मतलब वो जो क्लस्टर का जो कनेक्शन कॉपी करने का. हाँ, स्क्रीन प्रेजेंट करो, कोई बात नहीं. राइट, हाँ दिख रहा है.
दिख रहा है। हाँ यहाँ पर ये कॉपी किया। Go to MongoDB Atlas. MongoDB Atlas हो गया, wait. हाँ Did you open MongoDB Atlas? I can't see your screen, or probably it has been freezed. internet connections. Okay, so now go to clusters. Clusters. Now click on connect. एक बार स्क्रीन दिखाना, नेटवर्क इशू था, लीव हो गया। हाँ दिखा रहा नेटवर्क हूँ। थोड़ा सा इशू है। क्लिक ऑन कनेक्ट। कनेक्ट देन कॉम्पस। देखो तुम्हारा नेटवर्क आई गेस थोड़ा लैग कर रहा है, क्योंकि आई कांट सी। हाँ हाँ थोड़ा सा लेट में लोड हो रहा है। यस ठीक है, कोई बात नहीं। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल हैव टू हाँ कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लिया। हाँ कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लिया, मतलब कंपास से कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करना है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ अब उस कनेक्शन स्ट्रिंग को .env पे पेस्ट करो। हाँ कर और किया हुआ है। किया है तुमने, ग्रेट। देन व्हाट यू हैव टू डू इज in place of db password, enter your password that you have configured in database access, and if you have the inside the angle brackets, if you have db username, so you don't have db username is already written, so just in the place of db password, replace that db password with your entire password, ठीक हाँ है, ये including the angle डेटाबेस bracket. एक्सेस में जो राइट करना होता है वो ना, क्या डेटाबेस क्या? एक्सेस में जो यूजर होता है मेरा, वहां से हाँ जो पासवर्ड है वहाँ वो लेना है ना। हाँ वही। हाँ पर यहाँ पर पासवर्ड दिखा नहीं रहा है, एडिट करना बोल रहा है। বাংলা বললে বাংলা বলতে পারো, কোনো ব্যাপার না, আমি বাংলা বুঝতে পারি, ঠিক আছে, কোনো আচ্ছা অসুবিধা এখানে নেই। পাসওয়ার্ডটা দেখাচ্ছে না, এখানে এডিট করতে বলছে। হ্যাঁ ডিবি পাসওয়ার্ডের জায়গায় ওই যে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের মাঝখানে যে ডিবি পাসওয়ার্ডটা লেখা আছে না, তো হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট শুদ্ধ যে ডিবি পাসওয়ার্ডটা, ওই জায়গাটার মধ্যে তুমি জাস্ট নিজের পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দাও। পাসওয়ার্ডটা মানে পাবো কোথা থেকে ওটা তো, মানে পাসওয়ার্ডটা ইউজার মনে নেই? না, আমি তো র্যান্ডম ইয়ে করে দিয়েছিলাম, ও অটো আচ্ছা, জেনারেট করে। র্যান্ডম করে ওই তো অটো জেনারেট, আবার সিকিউর পাসওয়ার্ড করে কপি করে নাও, কোনো ব্যাপার আচ্ছা না। হ্যাঁ তাহলে ওটা করা আছে। হ্যাঁ ওটা ওটা করে, করা আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ দেন গ্রেট। আচ্ছা, এনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবলের ভেতরে যে এটা করেছো না, হ্যাঁ এনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবলের একটা নাম হবে, ভ্যারিয়েবল যেরকম নাম দাও, তো মঙ্গো ইউআরআই ইকুয়ালস টু এটা হবে, এই স্ট্রিংটা। হ্যাঁ ওখানে মঙ্গো ক্যাপিটালে, এখানে ক্যাপিটালে সব, অল ক্যাপস। মঙ্গো মঙ্গো ইউআরআই বা যা খুশি নাম, যা খুশি দিতে পারো, মঙ্গো ইউআরআই ইকুয়ালস টু দিয়ে দাও, ঠিক আছে। আচ্ছা দিস ইজ দ্য, এটা হচ্ছে মানে ওই যে বড় কানেকশন স্ট্রিংটা, এটার জায়গায় হচ্ছে এই ভ্যারিয়েবলটা ইউজ করা হবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ এবার এটা একটা ডিবিতে যে প্রবলেম। index.js বানিয়েছো, হ্যাঁ সেইখানে এই কোডটা একটুখানি দেখে নাও, ঠিক আছে। না ফার্স্ট এটাতে আমি লাইনে হবে জাভাস্ক্রিপ্ট হচ্ছে, নিতে চাইছি না। হুম নাও ইউ ক্যান প্রেজেন্ট ইউর, লাইক স্টপ প্রেজেন্টিং ইউর স্ক্রিন। না এখানে জাভাস্ক্রিপ্টটা ইয়ে করছে না, অ্যাক্সেস করছে না, কেন বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ কোনো ব্যাপার না, ওখানে জাস্ট ইটা দেখাচ্ছে না, লোগোটা আইকনটা দেখাচ্ছে না। আছে হ্যাঁ। আইকন দেখানোর জন্য ওই এক্সটেনশন ট্যাবে চলে যাও, একদম লেফটে, হ্যাঁ আর একটু চ্যাটজিপিটির উপরে, হ্যাঁ এখানে ক্লিক করো, মেটেরিয়াল আইকন থিমস বলে একটা আছে। অ্যাটমটা না মেটেরিয়াল, জাস্ট সার্চ মেটেরিয়াল আইকন থিমস, মেটেরিয়াল আইকন, ওই যে থার্ড ওয়ান, হ্যাঁ এটা ইনস্টল করো। হ্যাঁ এবার এন্টার মারো, হ্যাঁ এটা ক্লিক করো, এবার দেখো চলে আসবে সব ঠিকঠাক, আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে গ্রেট। আর ইয়ে ওই পার্টটা যেটা তোমার একটা টার্মিনালে একটা কোড দিয়েছিল যেটাতে তোমার বাকি পুরো এটা চলে এসেছিল। ও হ্যাঁ ওটা এমকেডিআইআর কোডটা, সেটা হচ্ছে এমকেডিআইআর, ঠিক আছে। ও এটা ইনস্টল করনি না, বেসিক্যালি তুমি এখনো টু ডু ফুল স্ট্যাক ডাইরেক্টরিটার ভেতরেই রয়েছো, ঠিক আছে। ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ ইউর ডাইরেক্টরি টু দ্য সার্ভার, তো তোমার তার জন্য সিডি ক্যাপিটাল এস, কারণ সার্ভারে তুমি ক্যাপিটাল এস দিয়ে করেছো, ক্যাপিটাল এস লিখে ট্যাব মারো, চলে আসবে। হ্যাঁ এন্টার মারো এবার। আচ্ছা সার্ভারের ভিতরে ঢুকে গেলে তুমি এইবার করো npm ইনস্টল, npm i mongoose স্পেস দিয়ে
দেখো চ্যাট বক্সে দিয়েছিলাম আমি কমান্ডটা, আমি আরেকবার দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, আই এক্সপ্রেস মঙ্গোজ। হ্যাঁ ব্যাস এইটুকু এটা কথা ঠিক হলো। আছে, প্রেজেন্ট বন্ধ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, প্রেজেন্টিং বন্ধ করে দিতে পারো, কোনো ব্যাপার না। আচ্ছা, তো তুমি ওটা করে নিয়ে তারপরে আমি কোডটা একবার ওয়াক থ্রু করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? So basically the first line in the first line there is we are importing the mongoose module, ठीक है? फिर we are creating a function named connectdb, ignore the background noise if you are getting any, ठीक है? Now console, I am inside the try block, I am doing a console log of creating a connection, then I am creating the connection, then I am logging out the message ki MongoDB has been connected. If there is any error, then it will log out ki Mongo connection error. Mongo connection में कोई एक error है, that will log out. So shall I proceed, everyone? Can I get a thumbs up? কোডটা বা চ্যাট বক্সে প্রিন্ট করে দেবে। কোনটা কোডটাও লাগবে? আচ্ছা ঠিক আছে, দিয়ে দিচ্ছি। বাট ট্রাই টু ফলো অ্যালং, क्योंकि এখন তো মানে আমি এটা অ্যাজিউম করেই নিয়ে চলছি কি যে জিএস তোমরা ভাই জেনে গেছো, তো সেই হিসাবে আমি চলছি, ঠিক আছে? তাও আমি কোডটা দিয়ে দিচ্ছি, কোনো ব্যাপার নাই। এইটা হচ্ছে কোডটা, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য কোড ফর MongoDB connection, but try to understand ki what's happening, ठीक है? So in the first line I'm importing the module. In the 7th line, this is the main line actually, ki I'm connecting the MongoDB database using mongoose for my application, ठीक है? और एखाने जे यहाँ पर जो process.env.mongo URI है, mongo URI is basically this name, ठीक है? That is a connectdb function, that is what it's doing, ठीक है? So as of now I can do it, I can write it done. Then comes to initializing the app, basically creating the server code, ठीक है? To create the server we need a package named express, ठीक है? Everyone probably know, if you have attended the previous class you will know it. Import express from express. Now what you have to do is const app equals to express, ठीक है? Now over here you will declare the routes, ठीक है? And then you will export this app, export default app. Why are we exporting this app? Because this app will run after the database has been connected, and that database connection will be in like the database connection, this connectivity function will be triggered from the entry point file. Index.js is the entry point file for our application, ठीक है? So at first we have to configure .env. We have installed a package named .env, right? But we haven't configured it yet. So let's do import .env, .env from .env, sorry, from .env, .env. Now let's do .env.config, ठीक है? And in the options this there will be path. Inside the path, what will be the path of .env? /.env, ठीक है? Now what you will do is import app, and now you will connect the database. After you have connected the database, there will be a then function, ठीक है? Then after you have connected the database, what you will do is app.listen the port in which your server will be running. As of now I am keeping it 8000, ठीक है? In the 8000 port the app will start, and inside this there will be
a console log कि the app is running on server on port 8000. If there is any error, app.on, if there is any error, ठीक है, I will console log the error, server start error. I will console log the error, and what I'll do is I'll do process.exit 1. ठीक है. Now there should be a catch block also. If there is some error in connectdb function, then what I'll do is console.log the MongoDB connection error, and we will console log the error also. ठीक है. Got it guys? Can I proceed? I know the session is going a bit heavy, but try to get comfortable, because you will have to, at some point of time, you will have to write this kind of code. Okay, this is a simple to do application. In future you will have to write a robust code base. Okay, can I get a thumbs up for the guys who have understood it, or who want me to proceed? भैया वो कनेक्ट डीबी मेथड का कॉल करने के बाद देन के बाद वो क्या बोले, रेस्ट एक वेरिएबल then if you have attended the previous class, you might know कि मैंने ना app.on और app.listen मारा था. ठीक है. app.on basically detects this line, this piece of code detects errors which is from Express. ठीक है. And if there is no error, then it will return कि server will start, and that will be ensured through this block of code. ठीक है. और ये जो डॉट कैच फंक्शन है, डॉट कैच का जो कोड ब्लॉक है, वो बेसिकली इंश्योर करेगा कि MongoDB कनेक्शन का एक एरर है, एंड इट विल लॉग आउट द एरर. गॉट इट? ओके. एंड रिमेंबर, in your VS Code also, just make sure कि to write app.js. ठीक है, क्योंकि ये एरर देता है. This convention gives errors a lot of times. ठीक है. When you are importing, it will import as db, but try to append db.js. ठीक है, क्योंकि this will help you. Now let's test कि if the server is running. In the start script, let's do the start script node source / index.js. ठीक है, क्योंकि this is in the index.js is the entry point file, and it's inside the source directory. So let's just over here you can leave it index.js also, but you can also it's better to write, it's good to write source / index.js. ठीक है. So let's do npm run start and see if the server is running. Okay, module not found. ठीक है. What has happened? Let's see. Let's find the error in our code. It gives अरे यार, सेम एरर आ रहा है मेरे में भी. आई फाइंड इट. सेम एरर आ रहा है तुम्हारे में भी? एरर आ रहा है. अरे यार, सर्वर एरर. तब तो क्या ही करें. चलो फिर एक काम करते हैं, लेट्स वेट और लेट्स जस्ट डू द कोडिंग पार्ट. ठीक है, विदाउट टेस्टिंग. क्या ही कर सकते हैं, और हम लोग और कुछ कर भी नहीं सकते अभी. ठीक है. So basically what this is doing is we are connecting to the database and starting the server. किसने right now who told कि सर्वर एरर हो रहा है उसका?
भैया मेरा अच्छा, can you just try to run this code and see if your authentication fails again? अच्छा कोडिंग I think I gave this password, I guess. Let me do. Okay, I gave my password wrong. ठीक है. Now you can see MongoDB has been connected. ठीक है, ये connection host है and server is running on port 8000. I don't know why this server error is coming, because otherwise I can't show you the data like how it's working. ठीक है. As of now, let's wait for the server error to get resolved. But we can do our coding part, because we can create, I guess, some database connections. Okay, so what this piece of code is doing is, as I've written in the comment, connecting to the database and starting the server. Got it? That's what this code is doing. Now what you have to do is declare the routes. Okay, now this part is done. Init app is done. Okay, index.json starting the server is done. Now I will directly jump into creating the to-do model. Okay, so before that we need to know what is a schema. A schema, as I have told earlier, schema is a blueprint that defines the structures of the data type and validation. It validates the rules for the document in the database. In case of us, what will we have? Wait, let me create a file like readme.md. What will be present in the to-do file? What will be the schema of the to-do? The to-do will have a title, a description, okay? And then what it can have is status, or yeah, status will be either 0 or 1. 0 representing कि ये काम हो गया है, और 1 representing कि ये काम हुआ नहीं है. ठीक है, 0 और 1 will be the status. ठीक है. So these are the three parts. And also by default, when we turn on a flag named timestamps, MongoDB will allow you to create MongoDB will automatically create a created at and updated at. ठीक है. I think as per the time I will be able to show you only one or two endpoints. ठीक है, because it's taking a lot of time. And let me see if the MongoDB error persists. Yep, the error is present till now also. ठीक है, कोई बात नहीं. Now let's create the routes. ठीक है. No, let's create the to-do model at first before creating the routes. Inside the source folder, create a models folder and create a todo.model.js file. Okay, inside the source there will be a models folder. Inside the models folder there will be a todo.model.js folder, JS file. Okay, this is the convention. You can write todo.js also, but I'll work according to the convention which I follow normally. Okay, over here what you have to do is import mongoose. Now you will have to create to-do schema. Okay, now new schema. What will the schema consist? The schema will consist a title. Title will be of type string. Is the title a required field? Required will be set to true. Yes, because the title is required. The description can be optional. ठीक है. The type of the description will be string, and we are not setting to required true because description can be optional. And the status will be of type number. ठीक है, क्योंकि status will be either 0 or 1, and by default the status will be 0. And when we do timestamps true over here, this will enable कि created at and updated at fields are created. Unfortunately, I might not be able to show you because this is giving server error. MongoDB is giving me server errors. Okay, now let's create the model. Okay, const to do model.
No, when you create the model, it's always good ki create a singular variable, ठीक है, a variable, not to do's. The model will be named to do, ठीक है, क्योंकि एक particular to do के लिए हम actions लिखने वाले हैं. And then what we will do is, let's go to the mongoose docs at first. Mongoose docs, ठीक है. What does it need to create a model? This is the exact code, mongoose.model, then the model name and the schema, ठीक है. mongoose.model, the model name which will be to do, and the schema which will be to do schema, ठीक है. Now we will export default to do. Why we will export? Because we will have to use this model to create and update and delete and get documents, ठीक है. Now this part is done, ठीक है. Creating the to do model is done. Creating the controller for post, patch, get and delete, ठीक है. ये I think I will be able to show post and patch. If the time permits, I will go for get and delete also. After doing the post, the session will go up to you guys, ठीक है, as per you say, ठीक है. क्योंकि एक endpoint तो मैं assignment देने वाला हूँ. It can be anyone. So create a folder named controllers and create a folder named routes, ठीक है. Inside the routes folder, create a file named todo.routes.js, ठीक है. Over here, what you will do is import router from Express, ठीक है. Now const router is equal to router. Is everyone able to follow along? Can I get a thumbs up, guys? Because I'm telling by my own. And I know the session is going pretty fast, ठीक है. But at some point of time you will have to do it, because this is backend, and backend is not really very easy, and it's also not very tough, to be very honest, ठीक है. So if I can get a thumbs up, then that will be great. Anyone facing any problems? Then I will just follow along. I'll wait for a bit. to-do.model.js में वहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन, उसके बाद क्या क्या? टाइटल डिस्क्रिप्शन के बाद मैंने स्टेटस दिया, क्योंकि एक टू डू को तो तुम देखना भी चाहते हो कि टू डू क्रिएट, मतलब इफ इट हैज बीन लाइक कंप्लीटेड और नॉट, ठीक है. स्टेटस 0 मतलब यू विल हैव टू डू इट, यू विल हैव टू डू द टास्क, एंड if the status is 1, it means ki the task has been done. On that analogy, I did the status, ठीक है. Got it? Or I can explain the purpose of status once again also, if you want. समझ में आया? हेलो आयुष? हाँ भैया. समझ में आया क्या? मतलब हाँ भैया. ठीक है. Okay, great. So now what we can do is go to the routes folder, create the router, ठीक है. And then what will be the endpoint? The endpoint will be router.route, ठीक है. This is a slightly different code, because we are creating the routes inside a different folder, ठीक है. router.route create, and this will be a post request, ठीक है.
Now going back to the request response model again. Okay, inside the post request there will be request, there will be response, and also we will have a try catch block. Okay, if there is any error, the error will be logged onto the console, and the name of the error will be create to do error, and this is the error. Okay, this is the create part. From the request body we will have to take in, from the request body we will have to take in title, title and description. Okay, from the request dot body we will have to take in title and description. Now our next goal will be creating the to do, creating the document in the MongoDB database. But why did we make the controllers folder? The controllers folder was basically to store these functions. Okay, whatever I wrote over here, these function till after post, the request response function that I have written over here, this will go into the controller file. That is how we organize the code. Okay, inside the controllers file you will create a new file, todo.controller.js. Okay, or inside here, over here you will do const create to do. This will be a async function, async function, and paste the function that you have created just now. Okay, and also since we will have multiple functions over here, it's good to do export const. Okay, so what will be inside the post? What will be inside post? Inside post there will be create to do. Okay, let's save it and let's edit this file now. Okay, creating the document in the MongoDB database. But at first we have to validate. If there is no title, what will we do? We will return res.status, response.status of 400, and the JSON body will be, अरे यार क्या हुआ? JSON body will have message title is required and success will be true. Why did I do message and success? So that we can write code which is organized and can be readable and is readable. Okay, it is always, sorry, success will be false. It's always good कि you write something which can be read by others, and so creating this success false means an extra layer of validation कि if the request that has been sent has a successful response or not. Okay, now since the description is optional, so I'm skipping the check of the description. You can do the check for the description also if you have set the description to required true. Okay, I didn't set it to the required true, so by default the description is required false, required set to false. Okay, now what you have to do is creating the to do. Const to do will be new to do. This will be imported from models/todo.model.js file. Okay, inside the models we have the todo.model.js file, and the new to do will have title, a description, and now we will do await to do.save. Okay, then after the your to do has been saved, we will return the response. The response will have status 201. The JSON will have
will have the message of to do created successfully. Success will be true, and data will be to do, to see कि the to do has been created and what's present inside the to do. Okay. Now this has been linked over here, but this router has not yet been linked to our app, right? So to link the router to our app, we will have to at first export the router, export default router. After you did the default export to our router, now you can declare the routes in your application. Okay. When you declare the routes in your application, we will have to do const to do route, sorry, import to do route from dot slash routes slash to do routes.js. Okay. Then we will do app dot. By the way, is everyone able to follow through? Like, I know the session is going a bit fast, but we don't have an option because I also have to finish this. Okay. So if you face any problem, make sure to unmute yourself and tell me. Okay. I am from first year, by the way, so no need to worry. Most of you are either of my age or you are seniors. Okay. So if in case you are facing any problem, just unmute yourself, send me a message, or just write it in the chat box. Okay. Now coming to declaring the routes, our app will use this endpoint. Okay. This is the convention I will go through key, because this is the version 1 of our API, and this will be a to do route. Okay. App.use API/v1/to do, and after that there will be the create part. Okay. And over here we will just write to do routes. Okay. This router can be accessed through this endpoint. Okay. Now let's start. Now if you see key, every time we make a small change, we will have to stop the server and then start the server again. Okay. We don't want that. We want a smooth development experience, so that whenever we save our code, the server automatically restarts. So there is another external module named as NodeMon, which does that. Okay. Just type npm i nodemon save dev. Okay. What it will do is NodeMon will be installed in your project, and let's wait for a bit so that NodeMon gets installed. Okay. NodeMon has been installed. Now, if you go to package.json, you can see dev dependencies as NodeMon. And when you do the dev script, inside the scripts, specify dev and write NodeMon source slash index.js. Okay. Now, if you run npm run dev, automatically your server will start. See, if the app has been crashed, we don't have to like stop the server and run it again. It will automatically log out key app crash, waiting for the file changes. Let's see what is the error. So the error is in source routes to do routes.js, and the error is module not found of to do controller. Okay. So why this is happening? Because we have not specified to do controller.js. Once we do this, you can see connection has been started, server is running. Okay, smooth. Now let's test it out. We are running our server on port 8000.
ठीक है. Let's go to Thunder client, create a new request. We have create, what is the type of request? We have created a post request. If you see the route, you will see we have specified a post request. ठीक है. Through which protocol are we accessing the endpoint, accessing our resources? Through the HTTP protocol. What is our host name? It will be localhost. What is the port? It's 8000. What is the API endpoint? The API endpoint as set over here is API/v1/todo. ठीक है. Let's write API/v1/todo, and to create a new to do, what we will have to do is we will have to do a /to-do/create. ठीक है. Now inside the body, if we specify a title, let's give it a title hello, and the description will be hello world. ठीक है. And if I click on send, well, you will see an error. Cannot destructure property title of request.body as it is undefined. Strange. Why it is happening? Because we haven't specified in our application कि we want to use JSON objects as our request body. To do that, we will have to do app.use express.json. ठीक है. Once you have saved this will create, the server will start again. And now if you click on send, you will see to do has been created successfully. Got it, guys? Can I have a thumbs up for the folks who got it? Install Thunder client in your, absolutely. Okay, great. Others, I know the course is going pretty fast. I mean, it was a prerequisite key you do the previous class before this one. You can go over to the recording, watch the previous class, and then come back to the recording of this class also. Okay, there is no problem with that. And I had also given you an assignment of watching the videos. If you didn't, it's recommended ki you go and watch the videos of Hitesh sir, because he's like an OG person. He explained backend development very well. Okay, after you do these 2 sessions, if you jump into Hitesh Chaudhary's class, your development experience will be very smooth. Okay, just make sure to understand everything what I said. Okay, to do has been created successfully. Let's see if the MongoDB Atlas is running. Sorry, not Mongoose docs. MongoDB Atlas. If the MongoDB Atlas is running and not showing any error which we were seeing previously. Okay, you can see that's good. Let's see if we can log in. And okay, great. So my MongoDB has been loaded. Let's see the clusters. Click on browse collections. Okay, before watching if the data has been created or not, see over here I have specified to do backend. Okay, what is this? This is basically the name of the database connection. ठीक है. So over here, this sample infix will be created by MongoDB itself. Inside the to do backend, you will see a model named to do's, but we named the model as to do, right? So MongoDB does it by default. Even if you create the model as to do, it will be renamed to do's. Even if you create the model as small to do, it will be renamed to do's. It will save that to do's, TODOS. And if you create it like this, then also to do's will be saved. Okay,
it will always pluralize your model name and make your model case to lowercase every time. MongoDB will do that by default. Okay? So you can see as per the title and description, we have created the title hello and we have created the description hello world. Okay? So as of now, we are good with this route of creating a to do. Okay? Now there is one more route that I will show you, which will be to mark to do as done, mark task as done. Sorry, not to do, mark task. Okay? Export const to do done equals to async request response try catch error. Oh, sorry, my bad. Copy this line, paste it, and this will be to do status update error. Okay? What will we do over here? We will basically set the status of a particular to do data to 1. By default, you can see the status is 0. We will set it to 1. We will just set it to 1. Okay? Let's create a to do of learning JS. Okay? And the description will be watch lecture 1 to 5 of JS playlist. Okay? Let's create a to do. If you go to your database and click on refresh over here, you will see another description has been created with a created at and updated at field. Okay? The title is learning JS, description is watch lecture 1 to 5 of JS playlist. Okay? And the status is 0. And now our main goal is to do the status as 1. How will we do? As of now, I will take in the ID from the parameter. Okay? The ID will be request.params, and then we will update the to do. Okay? How will we do it? This is the syntax. Await to do dot find by ID and update. Over here, you will have to pass your ID. Okay? We passed our ID. Now we will set status to 1. Okay? After this is done, we will return res.status. Okay. Now this is do your own research. Handle the request if there is no to do. You will get all of this code. I will send all of this code after pushing it into a GitHub repository in the project dev group also. Okay, don't worry about that. Do your own research for this part. Okay, it's very simple. It's just like this. Okay, now I will continue through the happy path. According to the happy path, to do will be updated, and I will return res.status 201.json message to do has task marked as complete and success will be true. Okay, I will go on with the happy path. Do your own research about handling a request if there is no to do. Okay, why did I do request.params, not request.body? Basically, I am creating a dynamic route where I will. Okay, let's just create the route. After that I can explain it to you. Okay, I have exported the function to do done. Okay,
now if I go to, अरे यार ये क्या बोल रहा है, अब ठीक है. So now if I go to router.route slash mark no slash complete, and remember this syntax guys, ठीक है. This colon id specifies that you will have to provide this id, this thing that you see over here, this id you will have to provide so that the status can be updated. You will not update the status of every document, right? You will update the status of one particular document. So in case for doing that, you will have to provide the id of a particular document, and so that we can update it. Okay. Now do dot patch. Patch is for updating. Okay. Post is for creating, get is for retrieving information, delete is for deleting information, patch is for updating information. Okay. And there is also another named put. Put is basically replacing the information, replacing the complete information with something new. Okay. Put is, you can say put is also for updating, but updating the whole document. Also another a convention. Okay. So what did we name the function? The function was named to do done. This over here, the thing that we specified over here, colon id, while creating the request, just I am just copying this id as of now. Bro, I think your net is lagging. Deepanda? Yeah, I think your net is lagging because I only show seeing the patch only. Then I did not show any writing, any right thing. Yeah. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কত অবধি দেখতে পেয়েছো? Patch, PATCH. Yeah. Now এবার ঠিক আছে? it's working. Now it's working. Yeah. Okay, great. Okay, that's good. So so let's create another request. Okay. So API slash v1 slash to do will be the same because we have specified it over here. The API slash v1 slash to do will remain the same, and then the route will be complete. The route will be complete. And instead of this colon id, I will give the actual id of this data. Okay. I will give the actual id of this data. Now if I click on send, you will see 404 not found because I did a post request. From here you will have to specify a patch request. Now if I click on send, you will see task mark as complete. Okay. Now go to the database. And click on refresh. Okay. Now when you click on refresh, you will see the learning JS, the status of learning JS is set to 1. Got it? Damn, 6 people are present. Congratulations guys who have stayed till the end. I mean, I think three has stayed till the end. Okay, the session might be a bit heavy because otherwise. Yeah. It's okay. No. Okay, so now what I'm doing is, now let's just wrap up this session. Okay, I will give you some assignments. I'm writing those assignments. I will I will push the code into GitHub and send the code into the project dev group. Okay. The thing that will be in the assignment is this function, to do update, to do. Okay. I'm creating the boilerplate request response. Okay. DYOR update the to do. Basically change
the title and description of a particular to-do. DYOR create fetch all the to-dos, export const fetch all to-do, async request response. DYOR fetch a particular to-do, export const fetch single async request response, and DYOR delete a to-do, export const delete to-do, async request response. Okay, this is the assignment. Basically, you will have to create the routes and complete assignment. Head over to the controller file and create routes and controller Okay, file. Sneh, do one thing. Just write the assignment in the group. Okay. Sure. I will. Okay. Head over to the controller file, create the functions as specified, and create routes for the same. Ask me or others for help. Okay, so this was our today's session. Let me wrap you up. What did we do till now? We created an empty repository, configured the package.json, learned about databases, learned about SQL and NoSQL databases, learned about horizontal and vertical scaling in a bit. Then we started building a to-do CRUD application. While doing that, we learned a bit of Mongoose. We learned what Mongoose schema are. I have not told what Mongoose model is. A model is a Mongoose object based on a schema. Basically, whatever the model is, basically the purpose for which you make your schema. Okay, that is a model. And then while we were coding, we learned how